Good morning, ladies and gentlemen, esteemed colleagues and distinguished guests. I am Dr. Nishant Sharma, your moderator for this afternoon. I am deeply honored to welcome you to this special virtual session powered by AstraZeneca. Today, we are celebrating September Stand, a virtual campaign for prostate cancer awareness. We have two very amazing lineups today with us where we will be having certain patient voices, certain prostate cancer survivors, where we will be discussing about how did they manage and the kind of message that they'd like to give to all our audience watching. And then we will have a very special guest with us, Dr. Swati Shah, who's a robotic uro and gynae surgeon at Apollo Hospital, Ahmedabad, and we will talk to her about the signs and symptoms, the prevention methods, the diagnosis methods, and all that we need to know about prostate cancer. So first, we'll start with our patient voices. We have with us Mr. Jayesh Patel. Good morning, Mr. Jayesh. How are you? Good morning. एकदम fine sir जी. Yes, sir. So tell us अपने बारे में कुछ पहले बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम जयेश पटेल है. मैं रहता हूँ अहमदाबाद में. ठीक है सर. एंड आपको प्रोस्टेट कैंसर की तकलीफ कब डिटेक्ट हुई थी? थोड़ा सा उसके बारे में हमें हिस्ट्री बताइए कि आपको प्रोस्टेट कब डिटेक्ट हुआ था? उनको है मेरा फादर, मेरा नहीं था, मेरा फादर का था. आपके फादर का नाम क्या है सर? नाथालाल पटेल. ओके. एंड उनका एज क्या है? 69. ओके. व्हेन वाज द उनको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज कब हुआ था सर? प्रोस्टेट कैंसर यानी कि उनको पथरी का जो प्रॉब्लम था, तो पथरी के लिए मैंने ऑपरेशन करवाया था. तो उसके बाद में साथ में प्रोस्टेट भी था, तो प्रोस्टेट का दोनों साथ में ऑपरेशन करवाया. तो प्रोस्टेट का जो था ना, वो मैंने बायोप्सी के लिए भेजा था. तो बायोप्सी के लिए भेजा ना, उसमें डिटेक्ट हुआ था. ठीक है, ठीक है. तो उसके बाद सर उनको जो प्रोस्टेट से पहले आप जैसे बता रहे हैं कि उनको पथरी का प्रॉब्लम आया था, तो क्या उनको तकलीफें क्या रही थी, साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहे थे जिसके कारण आप लोगों ने पहली बार जाकर जांच कराई थी? हाँ, उनको है ना ज्यादा पेशाब में तकलीफ हो रही थी. पेशाब जब कर रहे थे ना, तो पेशाब इतना खुला सा बंद नहीं हो रहा था. ओके, ओके. और इसके बाद आप कौन से हॉस्पिटल गए, आप कैसे डॉक्टर से मिले और क्या क्या प्रोसेस रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. एंड आई विल आल्सो एनकरेज डॉक्टर स्वाति, यू कैन आल्सो गेट इन दिस कन्वर्सेशन हियर प्लीज. मैंने ये पथरी का ऑपरेशन मैंने यहाँ पे महसाना है ना, महसाना में डॉक्टर राजगुरु के पास गया था. तो उन्होंने उसका बायोप्सी के लिए भेजवा था. तो बायोप्सी किया था, उसमें डिटेक्ट हुआ. उसके बाद में फिर बाद में मैंने यहाँ पे ये अपोलो में उसके बाद 2-3 जगह मैंने गया, पर 2-3 जगह मुझे ऐसा भी मिला कि अगर कुछ भी होगा, कुछ नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम होगा प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशन करने में, नॉर्मल कुछ, तो जारा के बाजू में जो नली होती है ना, वो बारीक सा, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है. तो उसकी वजह से साइड में होल करके उसको संडास करवाना होता है. ऐसा 2-3 जगह पे मुझे ऐसा बोला. फिर मैंने यहाँ पे अपोलो में गया ना, अपोलो में मुझे बहुत सही तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये अपने ये रोबोटिक सर्जरी से करेंगे ना, तो आपको ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा. ठीक है. तो और आपने फिर अपने फादर का ऑपरेशन कब कराया था, कितना टाइम हो चुका है उस चीज को? 1 महीना हो गया. ठीक है, ठीक है. अभी कैसी उनकी सेहत कैसी है और उनका रिकवरी कैसा चल रहा है? नहीं, सही है, अभी सही है. ठीक है, ठीक है. एनी क्वेश्चन डॉक्टर स्वाति जो आप ऐड करना चाहेंगे फॉर द पेशेंट प्लीज? अभी ऐसा होता है कि अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि काफ़ी बारी हम जो बायोप्सी टाइमली कर लेते हैं, तो पेशेंट्स का डायग्नोसिस जल्दी टाइम से बन पाता है और इन पेशेंट्स को क्यूरेटिव यानी कि बिल्कुल ठीक हो जाए उस इंटेंशन से ट्रीट कर पाते हैं. काफ़ी जब रोबोटिक सर्जरी नहीं था, तो इस स्टेज में पेशेंट्स को ऐसा बोल दिया जाता था कि अभी ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट अभी ये सब में ऑपरेशन करके और बाद में ज़रूरत पड़ने पे दूसरे ट्रीटमेंट ऐड करके इस प्रकार से काफ़ी पेशेंट्स क्योर यानी कि पूरे ठीक हो पाते हैं. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर स्वाति. कमिंग बैक टू जयेश, तो अभी आपको सर्जरी होने के बाद और क्या क्या एडवाइस किया गया था, फॉलोअप्स किस तरीके से आप अपने फादर के मेंटेन कर रहे हैं हॉस्पिटल में सर? अभी तो घर है, घर पे वैसे तो अभी ऐसा कुछ नॉर्मल सा थोड़ा बुखार, ऐसा ठंडी वंडी ऐसा लगती है तो कर लेते हैं. ऐसा अभी मैडम को मैं कॉल करता, तुरंत वो मुझे रिप्लाई करते हैं, सब गाइड करते हैं मैडम.
ऐसा नॉर्मल कुछ हो तो। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, इसके अलावा सर आप गिवन कि आपकी फैमिली में एक आपके फादर हैं जैसे जो मरीज रह चुके हैं प्रोस्टेट के, ऑल द पीपल जो अभी हमारा ये वर्चुअल सेशन सुन रहे हैं ऑन प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस, आप उन लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अबाउट प्रोस्टेट कैंसर, प्लीज? वही कि यहाँ पे अपने जो अभी मैसेज किया था, नहीं सर, माने मेरा आपसे सवाल का मतलब ये है कि जिस तरीके से लोगों को कैंसर शब्द सुनकर एक अंदर से डर महसूस होने लगता है कि हम लोग अब किस तरीके से अपना जीवन चलाएंगे और ना जाने कैसा, तो उसके बारे में गिवन कि आपकी फैमिली में एक पेशेंट रह चुके हैं जिनको सक्सेसफुली हमने ऑपरेट कर दिया डॉक्टर्स ने, आप उसके बेसिस पे क्या मैसेज आगे प्रमोट करना चाहेंगे, प्लीज? नहीं, इसके लिए कभी किसी को ऐसे डरने की जरूरत नहीं, ऐसे इसकी सर्जरी पॉसिबल है। मेरा खुद का अनुभव है, यहाँ पे मैंने अपोलो मैंने जो किया मैंने सक्सेसफुली हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे, यानी कि हो सकता है। डॉक्टर स्वाति, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैसेज मतलब वही होता है, कैंसर शब्द सुनते ही हम लोग सब डर जाते हैं कि जैसे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। अभी काफी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो डर के ना बैठे, जहां भी है आसपास दिखाएं और दिखाने के बाद ट्रीटमेंट की डिसीजन लें, तो उसके हिसाब से अच्छे रिजल्ट अपने को मिल सकते हैं। राइट, थैंक यू डॉक्टर स्वाति, थैंक यू जयेश, थैंक यू, आपने स्टेप अप किया एंड आपने अपने फादर की स्टोरी से और लोगों को मोटिवेट करने की, अवेयर करने की एक स्टेप लिया, सो वी थैंक यू, वॉइस ऑफ हेल्थ केयर थैंक्स यू, एंड यस, थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू मैडम। Okay. So now we'll move on to the second part of our virtual campaign, where we will be having conversations, where we will be having educative discussions with Dr. Swati Shah about prostate cancer, and she will put forward the signs and symptoms, the prevention modes, how are the diagnosis made, what are the different treatment protocols available, and her message as well towards all the patients. So I think we'll start with the questions. Dr. Swati, this question is for you. I'd like you to start by explaining the signs and symptoms of prostate cancer. Like Mr. Jayesh just told, difficulty in urinating can be one symptom. I'd like you to elaborate so that the individuals who are watching this can get a little aware about it, please. So prostate is a gland which is situated below the urinary bladder. So from the urinary bladder, a thin tube that is called as the urethra passes so that person can urinate. Around this tube, there is a gland that is prostate gland. So when there is a tumor in the gland, which can be a normal tumor, a normal increase in the size, or it can be cancer. So because of that, it will cause the pressure over that pipe. So these patients will have lower urinary tract symptoms, which we call as. So patient will have symptoms like difficulty in urinating, difficulty in starting the urination itself, because they are not able to void completely. They will have a sense of incomplete voiding. After voiding, they will feel that if they have not voided completely. Other thing is they will have frequency, like they have to go to urinate many times. Sometimes they think that it is normal for them to go to urinate multiple times at night. So many old age patients think that it is a normal thing that when their age increases, they have to go and urinate multiple times at night. So all these can be symptoms of normal prostate gland increase or a cancer in the prostate gland. Besides this, urine, the blood in urine, the recurrent urinary tract infections, these can also be the symptoms of prostate cancer. Right. So building on what you just said, so how do we diagnose prostate cancer and differentiate it from, let's say, a normal hyperplasia of prostate? And how do you feel that early diagnosis and early detection helps in improving the treatment outcomes? Yes. So in diagnosis part, the most important thing is a simple blood test that is called a serum PSA. It is a very simple test. Every man more than 50 years of age should get it done. This is called as screening, even if they don't have any symptoms. For those who have symptoms of urine, these urinary complaints, they can get a serum PSA test. This is a very simple test along with their routine health checkup. So if that test is high, then the further investigation start. So further investigation will include an MRI,
examination by a doctor, which we call as digital rectal examination. If these are doubtful and suspicious, we might go ahead with the biopsy. This biopsy is also a simple procedure done through the rectum, that is called as TRUS-guided, transrectal ultrasound-guided biopsy. Sometimes we guide it with the MRI also, so that we get good course and diagnose the prostate cancer early. Diagnosing it early really helps. So if we diagnose it in the first stage or second stage as early as we can, it is possible to remove it completely. So we can do the radical prostatectomy, complete gland can be removed, and we can cure the disease. So that is important, that even in cancer, we can cure the disease if it is diagnosed early. Right. So building on the same, like you were telling about radical prostatectomy, what are the different various treatment methods that are available for prostate cancer patients, and including surgery, radiation therapy, or medical therapies? I'd like you to put light on that. Yeah. Yes. At present, I would say for prostate cancer, we have 7 to 10 treatments available. So in these, 2 treatments are for local treatment. Like if we have a localized prostate cancer or local regional prostate cancer, for these we have 2 local treatments, that is surgery and radiation. Rest other 5 to 7 treatments, we have systemic treatments, that is chemotherapy, which we all know. Besides this, we have some hormonal therapies, which also help these patients who have advanced prostate cancer. Coming back to local treatment, that is surgery versus radiation. So both are equally good options. So in radiation, but the problem is the disease will be there. The patient has to undergo a 1.5 month treatment, but that is also an option available, especially for those who cannot undergo surgery due to the morbidity, or in the areas where the surgery is not available, because it is a special type of surgery requiring special equipments. It is not done everywhere. So in those areas also, radiation is preferred. Otherwise, the preferred treatment is surgery, which is called as radical prostatectomy. In this, the whole prostate gland is removed along with the surrounding tissues, and the lymph nodes are removed, such that patient will be finally cured of cancer. Everything will be removed. This surgery can be, yes. Please continue, Dr. Swati. Yeah. So this surgery used to be morbid because it was associated with blood loss, and patients would have problem like incontinence. But now with the availability of the latest technologies, these problems are not seen. All right. And any recent advancements in prostate cancer treatments in the recent years that all the patients and our viewers should know about? Yeah, so that is the latest technology that has made a great change in the prostate cancer treatment. That is the robotic surgery. So robotic surgery is now the gold standard treatment for localized prostate cancer. In this, the magnification, the 3D vision and high definition, and the camera that goes deep down in the pelvis helps us to perform this surgery quite precisely. The blood loss is now very less, and also we can preserve the important nerves as well as the sphincter, which was the reason for incontinence. So the return of function is very early, the sexual function also returns, and the urinary continence also returns quite early as compared to the open surgery. So the problems that we were seeing in the open surgery are now not seen when we are doing the robotic surgery. And like you're telling that there are different ways that a prostate cancer or a prostate treatment can occur. How do families make informed decisions about which approach to be taken, and what is the role of the doctors involved here? I'd like you to put some thoughts on that also, please. Yeah, because there are options available, then we have to explain the options to the patient. So in this, like if it is a localized prostate cancer, we will tell them that there is an option of radiation therapy as well as the option of surgery. So we have to tell them the pros and the cons, and including the cost also, and the feasibility also. Then the benefits in terms of the oncological outcomes, also the functional outcomes, and the side effects that can be there in both the treatments. So as per that, the patient would decide which treatment he would prefer. Okay. Thank you for that insightful answer. Moving over to talking a little bit about prevention. So are there any lifestyle changes or preventive measures that individuals can take that might reduce their risk of developing prostate cancer? And does it hold any significance? I'd like to hear from a specialist. Yeah. See, prostate cancer nowadays is a genetic cancer now.
So if there is any history in family suggestive of even breast cancer, like it was a myth that genetic cancers occurs in females only. So they are concerned if their mother has a breast cancer, then only the girl is worried that there can be a genetic transmission of the cancer. But prostate cancer is also a genetic cancer. So if there is a history of cancer in the family, like it can be breast cancer, ovary cancer, but we have this BRCA syndrome, which can be associated with the breast cancer, the ovary cancer, as well as the prostate cancer. So yes, it is not to scare you, but it is to be raising the awareness that yes, prostate cancer is genetic. And if we want to do something about it, catch it early and know about it, we should be vigilant about the family history. If there is family history of any of these cancers, the genetic testing can be done so that these can be diagnosed early and the appropriate steps can be taken. Right. So on this occasion of prostate cancer awareness, I'd like you to share some words on the importance of regular screening. And given that someone would want to start regular screening, at what intervals or at what age do you advise a man to start getting screening done for prostate cancer? Yes, I think this is the most important question as per our this discussion is concerned, because it is so common that everyone should know about it. The normal urinary symptoms are also so common that everyone should be aware when to think that it can be cancer. So most of the times, if someone has urinary symptom, 90% he or he will have only BPH. It will be benign hyperplasia. It will not be cancer. But when to consider cancer is dependent only on a simple blood test, that is serum PSA. So if you have urinary symptoms, meet your doctor, get the serum PSA done. If there is any doubt, then we do the biopsy. So this screening is very important. Even without symptoms, one should get the screening done with serum PSA report. It should be done after the age of 50 years. Every 2 years it is done if the PSA is less than 2. If the PSA is more than 2, we do it every year. For those who have genetic risk or who have family history of such cancers, the screening is started a bit earlier. So it is important to get screening done because the symptoms will come only when the prostate gland is actually compressing on the urethra. And as these cancers usually start in the peripheral zone, that is outside of the prostate gland, it takes some time that they cause the symptoms. So it is important that screening is done. That means healthy population, all those who are healthy, don't have any symptom, don't have any problem, should get this serum PSA test once they get 50 years of age. Right. I appreciate and thank you a lot for helping and stepping up to create awareness about prostate cancer. One last question or a message that I'd like to put forward, that on this occasion of prostate cancer awareness, a message or a key takeaway that you would like to give to all our viewers, caregivers or survivors or patient families or even individuals who have been diagnosed with prostate cancer in the past. One key takeaway from our virtual discussion here. Please, Dr. Swati. Yes, we have 3 ways to fight cancer. I rather call it 3 weapons to fight cancer. One is to prevent them. For whichever cancer we have the vaccines or whatever ways to prevent. Second is to screen them and catch them early. For screening, we have PSA blood test. And the third is don't be scared. It can be treated very well. Right. Thank you, Dr. Swati. I appreciate the time you took out to help creating awareness amongst the viewers that Voice of Healthcare has engaged in this panel. We appreciate and thank you for your time. I think one of other patient has also joined. Yes. So moving on, Mr. Laxman ji, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, yes. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, फाइन, एकदम फाइन सर, एकदम फाइन. जी सर, जी. तो आपको प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ था? जी. आपका उम्र क्या है सर? आपका एज क्या है? मैं 65. 65. और आपको प्रोस्टेट कैंसर, जी, कितना वक्त हो गया है आपको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज कब हुआ था सबसे पहली बार? Sometimes in January 23. January 23. January 23.
ठीक है सर। तो हाँ आपके शुरुआत में क्या तकलीफें रही थी, सिम्टम्स क्या रहे थे जिसके कारण आप डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, वो यूरिन में क्या है कि वो मैं यूरिन जाने के बाद भी मेरे वो कपड़े भी बिकते थे, और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं यूरिन पास हो गया है, लेकिन मैं यूरिन स्टॉप करके बाहर निकलता हूँ तो फिर भी यूरिन में से यूरिन निकलता था और कपड़े बिकते थे। तो मैंने इधर एक डॉक्टर के पास तपास करवाई और सोनोग्राफी करवाया, तो उसने बोला कि आपको वो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट है। तो बाद में मैंने पीएसए करवाया, तो पीएसए में मेरा 33 आया पीएसए नंबर। तो फिर मैंने वो उसका वो ऑपरेशन किया नहीं, वो बिनाइन प्रोस्टेट बोलते हैं ना, हाँ, वो इधर करवाया। तो उसने बाद में देखा कि ये तो बराबर नहीं है, आपको बायोप्सी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पीएसए ज्यादा है, 33 है, तो बायोप्सी करना पड़ेगा। तो हमने बायोप्सी करवाया, तो बायोप्सी में ये आया कि ये तो आपको सिर्फ बिनाइन प्रोस्टेट नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर है। तो बाद में मैं अपोलो हॉस्पिटल में स्वाति मैडम के पास पहुंचा और उसने मेरा ये ट्रीटमेंट किया। तो मेरे को अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा 15 डेज में मेरा यूरिन भी कंप्लीट हो गया है और कंट्रोल हो गया है, कोई भी तकलीफ नहीं है। अभी मेरा हेल्थ भी बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं रोज का 1.5 कलाक चलता हूँ और सभी खुराक भी मैं ले सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। और मेरा थोड़ा वेट भी जो था इससे थोड़ा बड़ा है। जी सर। तो आपके ट्रीटमेंट में क्या क्या हुआ था? आपका जब आप डॉक्टर स्वाति से मिले थे तो आपका सर्जरी हुआ था, और उसके साथ साथ और क्या हुआ था, हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। नहीं, वो क्या है, उसमें वो रोबोट सर्जरी हुआ था, प्रोस्टेट कैंसर का रोबोट सर्जरी करवाया हमने। और दो दिन ऐसे हॉस्पिटल में ठहरे, और बाद में तो मैं घर पे चला गया, और बाद में 7 डेज के बाद मैं वापस हॉस्पिटल में आके सब स्टिच ले आया, और उसके बाद तो मैं यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद 3 महीने के बाद मैंने वापस वो पीएसए करवाया, तो वो बहुत बहुत नॉर्मल आया। वो मैंने मैडम को भेज दिया यहाँ से, तो मैडम ने भी देखा हो तो बहुत बढ़िया बोला कि नहीं, ये अभी कोई तकलीफ वाला नहीं है, बहुत बढ़िया है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज? हाँ, लक्ष्मण जी का काफी अर्ली स्टेज का कैंसर था, तो उन्होंने टाइमली डिसीजन लिया, टाइमली देखा, जांचें कराई समय पर, तो अपना कैंसर जो है वो टाइमली अपने को पता चला, और ऑपरेशन द्वारा ही अभी फिलहाल के लिए ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, और अभी के हिसाब से सब अच्छा चल रहा है। तो पेशेंट जो स्ट्रांग रहते हैं तो हमारे को भी अच्छा लगता है, उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाता है, ऐसा है। हाँ जी। लक्ष्मण जी, आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सारे व्यूअर्स को, जो आज प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस का दिन है, तो इसके ऊपर आप और आपके जैसे लोग जो प्रोस्टेट कैंसर से बैटल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ना, उसको क्या है कि जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करवा के और अच्छे एंड से ऑपरेशन हो जाए तो जल्दी अच्छा हो जाए, बिफोर स्प्रेड इट एनीवेयर इन बॉडी, ये निकल जाए तो सबसे अच्छा है। और निकलने के बाद हमने तो जो ऑपरेशन करवाया तो बहुत बढ़िया मेरे को फील होता है, कोई अभी दिक्कत नहीं है। ये आज ऑपरेशन के आज 6 महीने हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मेरा यूरिन कंट्रोल भी बराबर है, मेरा बॉडी में भी कोई तकलीफ नहीं है, मेरा सभी जो स्टिच लिया था वो सभी भी क्योर हो गया है। और मैं तो सबसे ज्यादा से ज्यादा स्वाति मैडम और अपोलो टीम के लिए और अपोलो हॉस्पिटल का बहुत बढ़िया शुक्रिया मानता हूँ, क्योंकि ये मेरा जल्दी से जल्दी जैसा मेरे को मालूम हुआ कि ये आपका रिपोर्ट आया कि बायोप्सी का कि आपको ये प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट नहीं लेकिन प्रोस्टेट कैंसर है, तो मैं जल्दी से जल्दी पहुंच गया और मेरा इमीडिएट ट्रीटमेंट हो गया। तो मेरा का पहले टीआरपी हुआ था, तो टीआरपी के बाद डॉक्टर ने बताया कि टीआरपी तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन ये आपको बायोप्सी तो करवाना ही पड़ेगा। तो बायोप्सी करवाया तो उसमें थोड़ा ये आया, तो बाद में हम ये जल्दी से जल्दी अपोलो हॉस्पिटल में स्वाति मैडम को मिला,
हमको मालूम था कि अपोलो हॉस्पिटल में स्वाति मैडम ही ये अपना जो नया टेक्निक रोबोट से ऑपरेशन करते हैं, तो वहां पहुंच गया बस। बाकी तो सब कुछ उसने संभाल लिया और हमको क्योर करके ऐसे बाहर भेज दिया। मैंने बोला था मैडम मैं यहाँ ऐसे रोते रोते आता हूँ लेकिन हंसते हंसते जाना चाहिए, तो वही हुआ कि मैंने जो निकलते के टाइम पे मैं पैदल चल के बाहर निकल गया ग्राउंड तक, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं रही। और आज भी मैं मैडम का शुक्रिया और अपोलो टीम का शुक्रिया मानता हूँ। और मैं सबको ऐसा बोलता हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी जो डायग्नोसिस होने के बाद जल्दी से जल्दी उसको निकाल देना सबसे ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर स्वाति, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें प्लीज? लक्ष्मण जी ने बिल्कुल सही बात बोली। इम्पोर्टेंट यही है कि जल्दी से जल्दी डिसीजन लें, ट्रीटमेंट कराएं और उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मोटिवेटेड जी नहीं, रहें बिल्कुल और नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी जी लक्ष्मण जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरीके से प्रोस्टेट कैंसर से बैटल करके आगे आए एंड आप जिस तरीके से यू हैव वन, आप जीत गए। हमारे सारे व्यूअर्स और सारे वो परिवार जिनके परिवार में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या वो मरीज जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक काफी अच्छी मोटिवेशन आपसे आपकी ये वीडियो देखकर मिलेगी। हाँ तो जी जी जी, उसमें कुछ घबराने का नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले लेने का। जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा तो जल्दी क्योर हो जाएगा और आप उसमें से फ्री हो जाएंगे। लेकिन जितना लेट करेगा उतना ज्यादा तकलीफ होगा और निकलने में भी थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो हम तो एजुकेटेड आदमी है, तो जिससे जैसे मेरे को TURP किया, वो डॉक्टर लाडू मोर ने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, हमने बायोप्सी किया, अभी आपको जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो विद इन ए वीक टाइम वी अप्रोच टू अपोलो हॉस्पिटल इन अ गुड हैंड एंड अर्ली वी गोट द रिकवरी। Very nice, sir. It was a pleasure talking with you. Thank you for. You also thanks to Swati madam and Apollo team for getting my treatment earlier and get me cured very well. Right. Thank you, Lakshman ji. Dr. Swati, anything that you'd like to add here, please? I think that is the message, that screen it, diagnose it early, prevent wherever possible. So these are the 3 weapons to fight cancer these days. For prostate cancer, the latest technology we have is the robotic surgery, which is actually helping our patients to get better and to make them free of cancer. Right. So with this, I'd like to. मैडम मैं बहुत आपका बहुत आभारी हूँ मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आज मैं हंसते बोलते इधर आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये दैट इज ड्यू टू योर ट्रीटमेंट। Thank you Lakshman ji, thank you. हाँ जी जी, Thank you, Lakshman ji. We have with us Mr. Subash Anand. Good evening, Mr. Subash. Good evening. Sir, what is your age, and if you can tell us when did you first got diagnosed with prostate cancer? Yes, I'm Subash Anand and I'm 79 years old, or should I say 79 years young. Yes, sir. In 1921 October, we had gone to Canada to be amongst our children. In the flight itself, I noticed whenever I was urinating, a small drop of blood was coming. This was for the first time. This continued for a week, and I did not mention to my wife and daughter, thinking it might be an infection from the flight. January 22, my doctor took me to hospital and got my CT scan, ultrasound, etc. done. Showed to the urologist there. The urologist said a cystoscopy would be done and advised me for removal of one of my kidneys as it was swollen and prostate was enlarged. Till then, cancer was not there, or I had not got it diagnosed, something like that. Right.
Seeing the urgency and the seriousness, I preponed my stay in Canada and came back to India, which I thought was the right decision as the doctors here are very competent. In February 22, I came back, went straight to Medanta, consulted the top urologist at Medanta, Dr. Gupta there and Dr. N.P. Gupta. He did biopsy and the result was prostate malignant cancer. The urologist counseled me and my wife and convinced us that patients never die of prostate cancer. Unlike the doctor abroad who had almost frightened me to death. Though mentally disturbed, I became brave enough to face this calamity. You can go with the next question. Right, sir. So moving on to when you got diagnosed, please take us through. I would say initially, apart from the blood in your stain, the blood stain that you saw from your urine, any other sign and symptom that alarmed you? No, except I had some pain in my tummy. That was the reason I mentioned, which was quite severe. So I needed some relief from that. So my daughter took me immediately to the hospital emergency and got everything diagnosed. So I was just given this Calpol 650 mg. That's all. And the urologist there, he really screwed me up. First asking me if I had my medical insurance. I did. I said, yes, I did. Then he said, it may not be enough. So my daughter was ready. She said, we will bear the extra costs, whatever it is. You go ahead with the treatment. Then I thought the doctor is trying to fleece us. I even hinted I might go to India. And he said, I don't know how competent Indian doctors are. I felt like giving him my peace of mind. Then I controlled myself. So this was then January 22. Right. Just that drop of blood in my urine and pain in my tummy. That's all. Right. So, talking about after that, you had come to India and you did a biopsy, like you were saying, in Medanta, and you were diagnosed that it is a malignant prostate cancer. What were the different treatments that you went through, including if you underwent surgery or radiation therapy or chemotherapy? We'd like to know that. No, I'll tell you. Yes, emotionally, I was shaken and the future looked very bleak. I was feared that my end would be very near. But a lot of assurance from my doctor, my lovable children, and 100% support from my wife convinced me that I will become all right and live a normal life. So I started this hormonal treatment from my urologist with injections every 3 months and do not seem to be affected with anything. Now, after 1.5 years of hormonal treatment, the urologist has now referred me to an oncologist to be under his care because my PSA level started rising. The doctor was a bit worried. He said, now my medicine is not working, so I'm sending you to a urologist who may give you chemo or whatever latest therapies there are. So, since last 2 weeks, I'm going to this oncologist, also at Vedanta, who I learned is the best in India.
He's Dr. Ashok, whatever Ashok. it is. I'm just forgetting Ashok. No, Hmm. Acha, I'm forgetting his name just now. no problem. Please continue. So, now since last 2 weeks, I'm under an oncologist treatment who is so friendly and has already won my heart. I'm leading a normal life, and prostate cancer has not affected me in any way. He has put me on trial for 2 weeks on a medicine plus uh, plus a medicine and asked me to continue the urologist medicines also. So after 2 weeks, I went for a review to him with the fresh blood tests. He said, "You are doing fine. I'm okay with the treatment. Now you continue same medicines for a month, then again come back to me with the blood reports, and then we will review again." So Okay. this is the latest. This is the latest. I'm leading a normal life, and prostate cancer has not affected me in any way. All Your right, next sir. question, please. Next Sir, question. my next question is going to be talking about any lifestyle change that let's say from 2022 till today that you have taken different therapies, hormonal Hmm. therapy, and now you're taking this chemotherapy. Any change in your appetite? Any change in your hunger? Any Yes, lifestyle change, yes, weight yes, loss, anything that you have seen? yes. I'll tell you. Uh, the doctor has put me on this medicines, and he's going to try. And in the meantime, he has taken blood tissues from my body and sent to a lab. Mm-hmm. If this therapy is not working, then he may give me injections, 6 injections made of with my own blood mixed with that tissue, which will be, say, he, where chemotherapy, he said it won't work in your age. Mm-hmm. So if this medicines are not working with me, then he'll put me on 6 injections Mm-hmm. later on, which I hope and pray I may do not need them. My Right. lifestyle continues to be the same, except that now I'm getting up early, eating more green vegetables and fruits, which earlier I was not doing. Right. I'm having my morning and evening walks regularly, Mm-hmm. and from outside, I've repeatedly been telling my doctors, I don't feel as if I have prostate. Mm. It is only inside whatever mischievous things it is doing. From outside, I feel the same. Okay. You were asking me about um, what effect these medicines are taking on me. Yes, sir. Ever since I've had this disease, apart from being a little lethargic, I was very, very active earlier. I used to play golf regularly, but I've stopped that now. And Okay. my appetite, now I am having a small appetite. I used to love non-veg food, but now I don't get them digested. I do take each and every item which is served, but in small quantity now. So appetite has affected, and I have become a little lazy, for which I have to hear from my wife also. You are not doing this, you are not doing that, things like that. So this is it. My view on life has changed for the better. Mm-hmm. I now want to travel
and see the whole world, which I always loved doing earlier. Mm-hmm. I'm now planning to my visit to my children in Canada and US, and doctor has given me a green signal. He says, "How long do you want to go?" I said, Uh-huh. 5 months. I said, 5 months. He said, "Go ahead, take an injection for 6 months at a shot, and you can go. Carry your medicines with you, and you can go. You live your normal life." So this is it. Right, Your sir. next So, question, please. like you were talking about, the support. So, I'd like to hear a little from you about the kind of emotional support and the people who helped you through this experience in the last 1.5, 2 years that you are going through. Friends, family, the different kind of support that you have gotten from people. Yes, I've got tremendous support, main being my children and my wife. My wife has sacrificed almost all her outings, all her pleasures, and is supporting me wholeheartedly. So she's a real pillar of support to me. Mm-hmm. And a bunch of my friends with whom I walk every morning and sit down and chat with them. In the Mm-hmm. evenings also, we, a group of 5, 6 old friends, we sit together, keep chatting on various topics, and laugh a Uh-huh. lot. So Right. this is our secret. So we are living happily. This is it. Right. So, building on the same building and talking about support and help. Any advice that you'd like to give to someone who has recently been diagnosed with something such as prostate cancer? Yes. My advice to those having prostate cancer and who have just found out that they are having this disease, do Mm-hmm. not fear and face your problem bravely. Mm-hmm. Follow the doctor's advice and take your medicines and injections regularly and have faith in God. You will become all right and live a normal life. Yes, do keep walking regularly, morning and evening, and also try to be happy. So, this is my advice to them. Don't feel that you are tied down with some disease and you have to be on your bed and stay indoors. So, enjoy life, but don't miss your medicines, don't miss your injection, follow your doctor's advice. Thank you, Mr. Subash. I think your spirit and the way that you have battled through your prostate cancer is a real life example of how motivated and how psychologically positive impact can a patient have. And cancer is nothing. So any last key takeaway, a key message that you'd like to give to all our viewers here on this prostate cancer awareness day, please. Yes, I would like to convince prostate cancer patients that this is not a life threatening disease and one doesn't die of it. Do not be frightened of prostate cancer. Do not give up. People are having much more serious diseases. Medical fraternity is researching and coming out with latest technologies, and the wonderful results are showing. Have Mhm. confidence in the doctor treating you. So cheer up. Right, sir. It's really uplifting to see your positive spirit and the way that you're smiling and you're all confident. I mean, very rightly said. You're not 79 years old. You're 79 years young, sir. Uh, it Yes, was a pleasure hosting you. Thank you for stepping up with Voice of Healthcare and AstraZeneca in being a patient voice, in being giving your voice for being a prostate cancer survivor. We salute to your spirit.
And obviously, God bless you. Have a good day. Thank you. Thank you, Nishant. It was a pleasure talking to you. Look forward to be with you. Whenever Yes, you sir. need me for any advice or any counseling for the new patients, I am there with you. We appreciate Thank the you. support, Mr. Subash. Thank Have a you. good day. God, Thank you. God bless you. Bye. Thank you, sir. Yes, so continuing with our patient voices, we have with us Mr. Amarjeet. Good evening, Amarjeet ji. कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ज्वाइन किए ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। तो मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा। अपना पूरा नाम और अपनी उम्र बताएं। मेरा पूरा नाम अमरजीत अठोत्रा और एज 70। ओके सर, आपको प्रोस्टेट कैंसर कब डिटेक्ट हुआ था एग्जैक्टली? 2019 में हुआ था। सॉरी सर, फिर से बताएं एक बार। 2019 में। एंड आपको क्या तकलीफ आनी शुरू हुई थी जिसके कारण आप एक पहली बार डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, ऐसे सुबह मॉर्निंग टाइम में जैसे बाथरूम के लिए जाना होता था ना, तो एकदम प्रेशर जो है ना कंट्रोल नहीं होता था। तो इस वजह से कई बार तो बाथरूम तक जाते जाते भी थोड़ा सा लीक हो जाता था। ठीक है। डॉक्टर को दिखाया, चेक कराया। तो जी हाँ, तो वहाँ पे कराया था, क्या नाम है, बालाजी में करवाया था हमने। ठीक है। तो उन्होंने फिर बताया कि तो कुछ टेस्ट होंगे, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए थे, तो कहने लगे थोड़ा सा ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी जल्दी से पता लग गया आपको कैंसर के बारे में। ठीक है। तो टेस्ट जो आपके हुए थे, कौन कौन से टेस्ट हुए थे, अगर आप उसके बारे में एक बार बताएंगे, कौन कौन सी सिस्टम में डॉक्टर्स ने आपके टेस्ट करे थे जिसके बाद आपका डायग्नोसिस हुआ? एक तो PSA हुआ था, फिर उसके बाद बायोप्सी हुआ था। हाँ। और वहां से उन्होंने ब्लड के कुछ सैंपल लिए थे बैग से। तो उसमें आया था कि थोड़ा सा ये है। फिर उन्होंने MRI वगैरह कराया, पेट स्कैन हुआ, ये सब टेस्ट वगैरह होते रहे। ठीक है सर। तो 2019 में आप बता रहे हैं कि आपका डायग्नोसिस हुआ था, तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया गया? आपको सर्जरी बताई गई या आपको क्या ट्रीटमेंट बताई डॉक्टर्स ने? नहीं, सर्जरी भी बताई थी उन्होंने, लेकिन सर्जरी के अलावा उन्होंने कहा था फिर दूसरे आप नहीं सर्जरी कराएंगे तो इंजेक्शन वगैरह उन्होंने बताए थे, और कुछ टैबलेट्स थी, वो मेडिसिन वगैरह जो थी वो चल रही। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, इंजेक्शन वगैरह से ही हर 3 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है, वो कुछ ठीक है, हार्मोन थेरेपी का है। जी। और अभी जैसे 2019 से 4 साल हो चुके हैं, तो 4 साल से आपके लगातार इंजेक्शंस, हार्मोनल थेरेपी के इंजेक्शंस चल रहे हैं लगातार? हाँ जी, चल रहे हैं जी। ठीक है। और आप डॉक्टर और फॉलो अप कितने वक्त में दोबारा करते हैं डॉक्टर से? 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार करते हैं। और वैसे सर आपकी अभी सेहत कैसी है? हाउ आर द हार्मोनल इंजेक्शंस एक्टिंग? आपका अभी PSA कंट्रोल में है? और सेहत तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका ये साइड इफेक्ट तो होता ही है बॉडी में, थोड़ा इफेक्ट तो। हाँ जी, साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। हाँ, थोड़ा मतलब थोड़ी सी वीकनेस तो आती है ना जी। हाँ, थोड़ा मसल्स, क्योंकि ये हार्मोन की थेरेपी है, तो फिर मसल्स वीक हो जाते हैं। तो सर जैसे 4 साल पहले आपको प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस वक्त और आज के वक्त में आपकी लाइफस्टाइल में क्या-क्या चेंजेस आए हैं? आपके आहार में क्या बदलाव आए हैं? उनके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। आहार जो है ना, वो तो मैसेज तो मेरा नॉर्मल ही है। मैंने उतना ज्यादा वो नहीं किया, लेकिन हाँ, थोड़ा सैर वगैरह करता था। प्रोटीन वगैरह जो दे रहे हैं, वो सब जो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया हुआ है, वो मैं ले रहा हूँ। ठीक है। अभी आप आखिरी बार डॉक्टर से कब मिले थे? अभी इसी महीने मिले थे हम। ठीक है। और तो PSA वगैरह चेक करवाते हैं जी। तो वो मेरा जो लेवल था 0 आ चुका है PSA का। ठीक है। तो हाँ, तो बाकी उन्होंने कहा भी ये मेडिसिन आपकी चलेंगी और इंजेक्शन भी चलेंगी, आप घबराना नहीं। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं, अब बच्चे हैं, वो हेल्प करते हैं, सीधी सी बात है।
जी सर, इसी के ऊपर अगर मैं आपसे और पूछूं को जैसे कैंसर शब्द सुन के लोगों को बहुत डर लगता है, तो आपको जैसे 4 साल हो चुके हैं और आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, आप अभी भी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी, तो आप बताएं कि परिवार और दोस्त और बच्चे का सपोर्ट कैसा रहता है कैंसर डिटेक्ट होने के बाद? देखो, एक कैंसर एक एक्सीडेंट, ये नाम ही ऐसे है तो आदमी डर जाता है। शुरू में तो हुआ था ऐसे, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन है बच्चे शूट करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि ठीक है, नहीं ट्रीटमेंट तो लेना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ट्रीटमेंट तो लेना ही है। जी जी। तो इसके साथ आप ऐसा आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मैं अगला, कि हमारी वीडियो ऐसा कोई भी इंसान जिसको अभी अभी प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ है या उसने हाल फिलहाल में ही इसकी ट्रीटमेंट शुरू करी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा, घबराना नहीं है बस। जी, जैसे डॉक्टर एडवाइस करें आप उसको करो, आप ठीक हो जाओगे। ट्रीटमेंट जो है ना वो पॉसिबल है, क्योंकि जैसे मेरा इतना 370 PSA लेवल था, अभी मेरा 0 है। जी सर। अब 0 तो ये मेडिसिन से ही हुआ है। हाँ जी। हाँ। नहीं सर, और जैसे हम प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस पे एस्ट्राजेनेका के साथ एक कैंपेन कर रहे हैं, और इसके थ्रू आप सारे हमारे व्यूअर्स को जो प्रोस्टेट कैंसर सर्वाइवर्स की फैमिलीज हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स खुद हैं, जो और केयर गिवर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज एक देना चाहेंगे? जैसे कि आप 4 साल से जीत रहे हैं कैंसर से, तो आप क्या? जी, मैं तो यही कहूंगा, देखो फैमिली सपोर्ट तो मस्ट है ही है। उसके बाद अपने आप को भी थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है कि नहीं, हमें इससे लड़ना है, सीधी सी बात है। अगर आप हार जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको लड़ना है। सोच लो भाई, ये ठीक है, एक टाइम आया ऐसा, उसको फेस करेंगे हम, और कर रहे हैं ट्रीटमेंट के थ्रू। नहीं सर, आपकी मोटिवेशन और आपकी जो पॉजिटिव स्पिरिट है उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड किया कि कैंसर ऐसा भी कुछ नहीं है, इट इज बीटेबल एंड द पेशेंट्स कैन सर्वाइव। So we salute your spirit, sir. Thank you for spending your time with us, and thank you, sir. We wish you good luck. Thank you. Welcome. So with this, we bring our session to an end, and I appreciate Dr. Swati and our patient voices who have stepped up in creating awareness about prostate cancer. And I would like to personally thank Dr. Swati for helping us in educating people about prevention and different diagnosis and treatment methods that are available. Voice Healthcare thanks AstraZeneca as well for powering this particular virtual session on prostate cancer awareness. Thank you, Laxmanbhai. Thank you, Jesh, for bringing up your story, and we thank all of you.